Hi, how are you? In the last class you got what is subset, right? What? Let if every element of present in A, which is denoted by this way or this way. Let me give one example. Suppose let A 1, 2, 3 subsets, then subsets of A are. Can you recognize this symbol? This is phi and means representing a null set. Okay, then the set A itself is a subset of this set. Whatever set you consider, you get these two subsets always. These subsets are called trivial subset. Next, you can make subset taking single elements like this, 1, but bracket is important, okay? Then 2, 3. That means you are making subsets with taking one element. One elements are there inside this. Now taking two elements, you can make subset of A. Different ways you can select two elements from this element, 1, 2, 3. So first of all, 1, 2. Next, can you write 1, 3? Yes. So this is one subset. The other one is 2, 3. Okay. How many subsets you got? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. More than this you cannot get. How did I know that? There is a formula for finding number of subsets. What is that? Let me write this. Is equal to 2 to the power n. Use this formula for finding number of subsets of a set which contains n elements. If it contains 5 elements, then number of subsets will be 2 to the power 5. If it contains 0 elements, that means 5. So how many subsets of phi has? That means phi has 0 elements, so number of subsets will be 2 to the power 0, which is equal to 1. So subsets of phi is only 1. So we got these subsets from A. Got it? So A has 3 elements, so number of subsets is this. And all these subsets of A are this. So can we make a new set with these subsets, considering them as element? Have you understood my point? Suppose in a village, this is your house, house number 1. This is a set. Okay. House number 2, H2. This is another family's house and this is another set. So this is how you can get many houses, is not it, in a village? Okay. So every set here is a subset for village. Village के लिए ये हो गया सबसेट, लेकिन ये इंडिविजुअली क्या था? इंडिविजुअली एक सेट ही था. जब ये इसका अंडर में आ गया, ये सबसेट विलेज का सबसेट बन गया. और अब ये जो विलेज बन गया था, इस मामले में ये तो विलेज का एक एक मेंबर कितना हाउसेस है? n हाउसेस, या तो आप बोल सकते हैं 10 हाउसेस. सो ये अभी विलेज के लिए एलिमेंट का काम कर रहा है. तो इस तरीके से जब तक विलेज नहीं बना था तब तक हाउस एक एक सिंगल था. जब विलेज बना दिया, ये तो एलिमेंट का काम कर रहा है. तो ये एक एक सबसेट है. जब ये बना देंगे ऐसा करके और एक नया सेट, तब तो ये एलिमेंट का काम करेगा. जो ये नया सेट मिला, न्यू सेट obtained this way, that is known as, we denote this way, that is known as power set of A. Power set of A is the set obtained from the subsets of A. This is a new set. कैसे बनाया हुआ है? ये सभी A का सबसेट को लेके, और सबसेट का जो फैमिली हो गया, ये एक फैमिली को हम लोग पावर सेट ऑफ A बोलते हैं. ठीक है. Let us take one more example.
A, B. So power set of A. To get power set of A, power set of A, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पी ए. ये अगर चाहिए, इफ़ यू नीड दिस वन, देन इसका सबसेट चाहिए. सबसेट हम लोग कैसे बनाते हैं? फाई तो होगा ही होगा और ए खुद होगा. फाई लिखिए, ए को लिखिए, उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके बनाइए. ये बी और दो एलिमेंट वाला ये आ गया, तो हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इसको आप ऐसे नया सेट बना दीजिए, एनक्लोजिंग बाय कर्ली ब्रैकेट. सो दिस इज ए न्यू सेट फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज पावर सेट. ओके, number of elements in a power set of A which contains n elements is equal to 2 to the power n. So next, another very important set which is known as universal set, and then its definition is like this: in a particular context we have to deal with the elements and the subsets of a basic set which is relevant to that particular context. ये जो particular context का बारे में हम लोग डिस्कस कर रहा था, उस particular context में ये जो basic set है, जो basic set subsets of a basic set, okay, this basic set को हम लोग बोलेंगे universal set. जैसे for example even natural number, odd natural number, prime natural number, ठीक है, तो इन सभी एक सबसेट है. इसका एक बेसिक सेट का. व्हाट इज दैट बेसिक सेट? दैट बेसिक सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट. हियर नेम ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट विल बी n, आवर नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द आवर यूनिवर्सल सेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज we were discussing about even numbers, odd numbers and prime numbers. These are our particular context. In this context ये नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट होगा. तो हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. ये सब हम लोग का एक कॉन्टेक्स्ट हो गया है. ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो बेसिक सेट है वो हो गया ट्रायंगल. सेट ऑफ ट्रायंगल्स इज द बेसिक सेट. तो हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा इस मामले में? इसमें यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, तो ये था आपका पावर सेट और यूनिवर्सल सेट. सभी आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा और रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, let me add a very small but important fact. That is, this is universal set, subsets of universal set, and all kinds of sets can be expressed in diagrams. And that the facts or concept has been introduced by John Euler Venn, a British logician. That's why after his name we say that kind of diagrams, Venn diagram. Okay, with the help of Venn diagram we can express sets, right? This universal set, normally we use a rectangle. That means by rectangle we can express this universal set, and for each subsets we use circles, and the elements contained in this set we put this way or this way. So for elements we use dots, for subsets we use circles, and then for universal set we use rectangles. And combining all this, suppose set of natural numbers is the universal set. Okay, even integers, and then even natural numbers, set of even natural numbers, odd natural numbers. In diagrammatically, if we express this is for n, this is for
even natural numbers, and this is for odd natural numbers. Here 2, this is E, this is O. 1, 3, you put just one dot, and 2, 2, 4, 6, this way. We can express all kinds of sets in Venn diagram.